Next we have test for lipids. अब test for lipids के अंदर we will be talking about how to test for fats. ठीक है, हमने देखा था कि lipids की जब हम बात करते हैं, lipids में क्या होता है, when the lipids are in a liquid form we call them oils. When the lipids are in a solid form we call them fats. अब इन lipids को हम test कैसे करेंगे? First of all we are going to the food sample. The food sample is mixed with 2 centimeter cube of ethanol and it is shaken. जो food sample है which we want to test whether this food sample contains lipid or not, इसको हमने क्या किया है, एथेनॉल के साथ मिक्स किया. अब एथेनॉल का फॉर्मूला होता है इन केमिस्ट्री C2H5OH. We are going to mix the food sample with ethanol and then shake it. Number 2, the ethanol is added to an equal volume of cold water. उसी एथेनॉल को हमने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर के साथ ऐड किया है. अब हमने रिजल्ट्स को कैसे जज करना है? A positive test will show a cloudy emulsion. अगर आपके पास एक वाइट सा क्लाउडी सा इमल्शन फॉर्म हो गया, फॉर एग्जांपल दिस वन, क्या होगा? दिस इज द सॉल्यूशन, ऊपर क्या हो रहा है? दिस इज अ क्लाउड फॉर्म. अगर ये क्लाउडी इमल्शन वाइट कलर का फॉर्म हो गया, this is a positive result which will show that yes, lipids are present. If the cloudy emulsion is not formed, this would indicate a negative result that the lipids are not present. तो फर्स्ट आपने क्या किया है, 95% एथेनॉल का सैंपल में से आपने क्या किया है, सैंपल प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 95% एथेनॉल. 95% एथेनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती है, हमने थोड़ा बहुत मिक्स किया होता है उसके अंदर कुछ और. Now that 95% of ethanol, उसका हमने कितना वॉल्यूम लिया है? 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल वाज एक्चुअली टेकन. उसको हमने ऐड किया है सैंपल के अंदर. साथ ही उसी सॉल्यूशन को हमने ऐड किया एंड इक्वल वॉल्यूम, बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए है उस कोल्ड वाटर का भी. उसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर में ऐड किया. डिस्टिल्ड वाटर मींस जीरो इम्प्योरिटीज, कंप्लीटली प्योर वाटर होगा. The positive result would show a cloudy emulsion if the lipids are present, and if the lipids are not present, if they are absent, obviously there would be no cloudy emulsion. या आप दे सकते हैं, this is the sample, the food sample plus the ethanol. How much ethanol did we add? 2 centimeter cube. ये भी याद रखना है, 2 centimeter cube of ethanol was added. साथ ही हमने इसको ऐड कर दिया किसमें? distilled water के अंदर. If this cloudy emulsion is formed, this is a positive result. If the cloudy emulsion is not formed, this is a negative result. So the first test tube contains lipids. First test tube के अंदर lipids हैं. And in the second test tube, which is actually colorless, पहली में तो emulsion आ गया आपके पास, दूसरी वाली test tube आपकी colorless है, which means that the second test tube does not contain any lipids. So we have a positive result in front of you as, and we also have a negative result in front of you.